बहुत फोकस किया गया कि यूजर्स की प्रोटेक्शन, यूजर्स की प्राइवेसी का ध्यान और यूजर्स की राइट्स और यूजर्स की ड्यूटीज, उन सबको टेलीकॉम बिल में आपने देखा था कि व्हेन यू सॉ द फर्स्ट ड्राफ्ट, ऑल दोज थिंग्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द बिल। कंटिन्यूसली इस पे और काम करते रहना पड़ेगा। और दो जो मैं और कह रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि दो और कंज्यूमर फेसिंग रिफॉर्म्स पे काम चल रहा है, उसमें से एक का फोकस ये भी है। सर, it says that around 2.5 million handsets have been recovered out of 4.5 to 5 million handsets that were reported. So, were most of the recovered handsets found by the user itself, or did law enforcement agency is actually tracked down 2.5 million phones? Quite a lot of our basically the user itself is able to find many, and in many cases the law enforcement agency is also supporting. But what I want to really share with you is that this is something on which every police organization in the country, every state police, every law enforcement agency has given superb cooperation and superb inputs. Sir, this portal, can it also be used sometime in the future to surrender connections, because telcos make it very hard? You can do it immediately on this Know Your Mobile, where suppose you have safety is most important. आप याद करो, जब टेलीकॉम बिल का ड्राफ्ट आपके सामने पेश किया गया था, उसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि कस्टमर सेफ्टी, कंज्यूमर सेफ्टी, सिटीजन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड से बचाना, डुप्लीकेट से बचाना, हर तरीके से कस्टमर सेफ्टी। तो उसमें ऑल दी OTT प्लेटफॉर्म्स हैव आल्सो कोऑपरेटेड and they are absolutely on board to deregister the users which have been detected as fraud users, which means जैसे 36 लाख कनेक्शंस डिस्कनेक्ट किए, ऐसे ऐसे अस्त्र ने डिटेक्शन किए जहां पर एक व्यक्ति ने 5200 कनेक्शंस लिए। Can you believe this? Single person taking 5200 connections. This is an extreme, but Astra detected this. There is another record. One person took connections, 6,900 connections. These two are extreme cases which I am sharing with you. How the AI algorithm, how the Astra, which is part of the 3 reforms, could detect such anomalies and could actually correct it. अब तक 40,123 पॉइंट ऑफ सेल जो कि इस तरह के फ्रॉड में सपोर्ट कर रहे थे फ्रॉडस्टर्स को, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया। एंड दिस इज जस्ट ओनली अभी तक कितना 2/3 ऑफ द एंटायर कनेक्शंस या अबाउट हाफ ऑफ द एंटायर कनेक्शंस हैव सो फार बीन रन ऑन दिस AI algorithm. There will be more such frauds which will be detected. So these are the 3 major reforms which we are very happy to share with you. It fits very well into the Prime Minister's vision of making sure that telecom sector in India is globally benchmarked and each and every citizen using telecom services should be feeling secure. We are working on 2 more big reforms which we will be able to share with you in the coming months. So that will make 5 big customer facing reforms for our citizens. Now I'll take the questions. Yeah.